Hello everyone, welcome to the channel. On my previous video, I talked about our spinal nerves introduction. So if you have not seen that video, then click on the I button and watch that video now. Today, I'm going to talk about our dermatomes. Now, what is dermatome? What about? I will talk about this thing details. But before I talk about dermatome, you need to know something about our plexus formation. I mean the local network formation of each spinal nerves with adjacent spinal nerves. Okay. In our body, there is 4 plexus. One is cervical, then brachial, then lumbar, and sacral. These 4 plexus I am going to talk about very short. What are the parts of the plexus or what are the parts of the spinal nerves? Okay, तो जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो, इधर में क्या है कि जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि जो वेंट्रल हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का जो वेंट्रल हॉर्न है, इधर से मोटर फाइबर्स जा रहा है और स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल हॉर्न है, इधर से सेंसरी फाइबर्स जा रहा है। मोटर फाइबर्स और सेंसरी फाइबर्स दोनों एक साथ मिलके एक स्पाइनल नर्व बनता है। ठीक है, मोटर फाइबर्स आर कमिंग फ्रॉम द वेंट्रल हॉर्न and sensory fibers are coming from the dorsal horn. Both fibers merges together and forms one single spinal nerve. Think this is my body and this body is spinal cord. This part is anteriorly, so this is ventral horn, and this part is posteriorly, so this is posterior horn, dorsal horn. Okay, so fibers are arising from there. These are motor fibers. From there fibers are arising, and from there also fibers are arising. These are dorsal fibers, sensory fibers, and at one point these both fibers are merging together. Okay, now from this point to this point, I mean from arising point to the marginal point, this entire road or entire part is known as root of spinal nerve. Okay, when the motor and sensory fibers merges together, and this entire area, this area known as trunk of spinal nerve. Okay, now think like this spinal nerve will connect with second one will also connect with first one. Okay, second one will connect with third one will connect with second one, vice versa. Okay, third one will connect with fourth one will also connect with third one. Okay, मतलब पहला वाला दूसरे के साथ कनेक्शन बनाएगा, दूसरा भी पहले वाले के साथ कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, क्रिस क्रॉस जैसा। ठीक है, फिर दूसरा वाला तीसरे के साथ, तीसरा वाला भी दूसरे के साथ, तीसरा वाला चौथे के साथ, चौथा वाला भी तीसरे के साथ। ठीक है, मान लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इधर में एक स्पाइनल नर्व है, इधर में भी एक स्पाइनल नर्व है, तो ये वाला स्पाइनल नर्व भी इसके साथ कनेक्शन बनाएगा, ये वाला स्पाइनल नर्व भी इसके साथ कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, जिसके जरिए कनेक्शन बनता है उसको हम कहते हैं डिवीजन। सपोज वन डिवीजन इज अराइजिंग फ्रॉम दिस सेकंड स्पाइनल नर्व एंड एंटरिंग इनटू द दिस पोजीशन और मिडिल पोजीशन ऑफ द फर्स्ट स्पाइनल नर्व। सो दिस इज द एंटरिंग पोजीशन ऑफ द डिवीजन. So the rest of the area of spinal nerve we will call it cord. Okay, तो जहां पर डिवीजन खत्म होता है उसके बाद वाला एरिया को हम कहते हैं कॉर्ड. ठीक है, स्पाइनल नर्व का कॉर्ड. Now what happens from this cord? Multiple branch arises and spreads through our body. Now we know that in our body has 4 plexus. Cervical plexus, which is formed by C1 to C4. I mean first cervical spinal nerve to the 4th cervical spinal nerve, first, second, third, fourth. Brachial plexus forms from the C5 cervical spinal nerve to the first thoracic spinal nerve. What about lumbar plexus? From L1 to L4. Now what about sacral plexus? From 4th lumbar spinal nerve to the 4th sacral spinal nerve. Okay, so this is the thing, and I will talk about this brachial plexus in future because this is very important. So in my next video I will talk about this brachial plexus and the dermatomes. So till then, bye.